Hello. Okay, guys, good evening and welcome back to the legal session. चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं लीगल के. होप द स्क्रीन इज विजिबल. ओके, ग्रेट. जल्दी से स्पीड बैच स्टूडेंट्स अटेंडेंस लगा दो. टाइप L for legal in the chat box if you can hear the sound well. ठीक है? If you can hear the sound well, type L so that we can start the dictation. Okay, great. चलिए, सो एवरीवन गेट रेडी फॉर द लीगल डिक्टेशन. वी आर अबाउट टू स्टार्ट पटना हाई कोर्ट की सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, ऑल्दो पहले भी जो डिक्टेशंस करवाए थे ऑल द डिक्टेशन आर टोटली रेलेवेंट टू योर पटना हाई कोर्ट. ठीक है, एंड इसमें मैटर्स का कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है. यू एनी कोर्ट के लिए, इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई भी कोर्ट के लिए आप जा रहे हो, द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू इज़ ब्रिंग द मास्टरी इन लीगल मैटर्स फर्स्ट. ठीक है, ऑफकोर्स आजकल पैटर्न थोड़ा सा अटपटा सा आ रहा है. जनरल मैटर्स काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, बट इट्स नॉट मैंडेटरी आई से, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट दैट आप अगर कोर्ट के लिए जा रहे हो तो आपके पास में सबसे पहले सिंस 80-85 की स्पीड है, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं मांगी हुई है, तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. एंड लाइक यू ऑल नो कि किस तरह से हम डेली बेसिस पे लीगल डिक्टेशंस करवाते हैं. एंड डेली लीगल लिखना स्टार्ट करो, इट्स वेरी इजी. एंड इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में यू कैन जस्ट मेंशन इफ़ यू वांट मी टू मेक अ डेडिकेटेड वीडियो दैट हाउ यू कैन इंक्रीज योर स्पीड इन द लीगल डिक्टेशन. सो आई विल डेफिनेटली डू दैट इफ़ यू ऑल वांट दैट. बाकी चलिए शुरू करते हैं अपना डिक्टेशन. आज 85 WPM की स्पीड पर हम लिखेंगे इस मैटर को. ठीक है, ऑफकोर्स देखो आपके एग्जाम में तो 320 वर्ड्स 320 वर्ड्स ही पूछे जाएंगे 4 मिनट में. ठीक है, बट यहाँ पर क्या है कि हम थोड़ा सा डिक्टेशंस ज़्यादा वर्ड्स लिखेंगे. ठीक है, 400-500 वर्ड्स लिखेंगे ताकि आपको ज़्यादा वर्ड्स की अच्छे से प्रैक्टिस हो, आप उस पर एक्यूरेसी ले आओ. एंड सिंस द मोर वर्ड्स यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल बिकम फॉर द एग्जाम. ठीक है, एग्जाम के लिए आप और रेडी हो जाओगे. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं 320 वर्ड्स आप लिखोगे तभी आप एग्जाम के लिए रेडी होगे, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, चलिए हम वो भी करेंगे जैसे जैसे आपके एग्जाम्स की डेट्स नज़दीक आएंगे, विल डू दैट एज वेल. ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट. चलो रेडी गाइज, डिक्टेशन स्टार्ट्स इन 5 seconds. प्लीज बी रेडी. Steno School Legal Dictation 3, 2, 1 start. Shri Gupta further argued that in the present case, what was prayed for was a writ of quo warranto, and in fact, the election of the appellant was not called in question. Stop. It was argued that since the writ petitioner came to know about the appellant not belonging to the scheduled caste, and since the post of the chairperson was reserved only for scheduled caste, comma, the High Court was justified in entering into that question as to whether he really belongs to scheduled caste. Stop. In short, comma, the learned counsel argued that independent of the election of the appellant as a ward member or as a chairperson, comma, his caste itself was questioned in the writ petition only with the objective to see whether he could continue as the chairperson. Stop. The argument is clearly incorrect as the continuance of the appellant as the chairperson was not dependent upon something which was posterior to the appellant's election as chairperson. Stop. It is not as if some event had
taken place after the election of the appellant, which created a disqualification to continue as the chairperson. Stop. The continuance of the appellant as chairperson depended directly on his election, comma, which election was available only to the person belonging to the scheduled caste. It is an admitted position that ward number 8 was reserved for scheduled caste, and so also the post of chairperson. Stop. Therefore, comma, though indirectly worded, comma, what was in challenge in reality was the validity of the election of the appellant. Stop. According to the writ petitioners, comma, the appellant could not have been elected as a ward member, nor could he be elected as the chairperson, as he did not belong to the scheduled caste. We can understand the eventuality where a person who is elected as a scheduled caste candidate, comma, renounces his caste after the elections by conversion to some other religion. Stop. Then a valid writ petition for quo warranto could certainly lie, because then it is not the election of such person which would be in challenge, but his subsequently continuing in his capacity as a person belonging to a particular caste. Stop. The counsel for the appellant rightly urged that the question of caste and the election are so inextricably connected that they cannot be separated. Stop. Therefore, comma, when the writ petitioners challenged the continuation of the appellant on the ground that he is not belonging to a particular caste, what they in fact challenged is the validity of the election of the appellant, comma, though apparently the petition is for the writ of quo warranto. Stop. Again, merely because the appellant was described as being a Christian in the service records did not mean that the appellant was actually a person professing Christian religion. It was not, after all, known as to who had given those details, and further as to whether the details, comma, in reality, comma, were truthful or not. It would be unnecessary for us to go into the aspect whether the petitioner in reality is a Christian, for the simple reason that this issue was never raised at the time of his election. Full stop. ओके, सो दिस वाज योर 83 वर्ड्स पर मिनट डिक्टेशन. ठीक है, आज जनरल आपका एसएससी और लीगल दोनों का इस 83 के आसपास डिक्टेशन हुआ है, सो दैट्स अ गुड थिंग.
चलिए, वेर यू ऑल एबल टू राइट दिस डिक्टेशन गाइज? क्या लग रहा है, पटना हाई कोर्ट बहुत डिफिकल्ट लग रहा है या ईजी लग रहा है? टाइप ई फॉर ईजी एंड डी फॉर डिफिकल्ट. लेट्स सी what you all feel after this dictation. बहुत अच्छा लिखा गया, क्या बात है, वेरी गुड. आई फील गुड टू राइट लीगल डिक्टेशन. येस, वेरी गुड, एक्सीलेंट. ई, क्या बात है, सभी लोग को ईजी लग रहा है. डेफिनेटली इट्स ऑल योर माइंड सेट. अगर आपको कोई चीज़ लगे कि ये ईजी है तो वो काम आप आसानी से कर पाओगे. ऐसा नहीं है कि आप ईजी बोल दोगे तो काम तुरंत हो जाएगा. एफर्ट्स उसमें भी लगेंगे, बस उस काम को करने में आपको डर नहीं लगेगा या कोई फेलियर की ज़्यादा चिंता नहीं होगी. आपको लगेगा यार ये तो मैं अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. सो यू जस्ट हैव टू थिंक कि ये एक्चुअली ईजी है, तो वो होने लगेगा. ठीक है, एंड बस लगातार यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस, बाकी आपका काम हो जाएगा. कॉमा बोलते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कॉमा बोलते हैं या नहीं बोलते, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है. इट ऑल डिपेंड्स कि वो जो डिक्टेशन आपको देने वाले पर्सन है वो कैसे डिक्टेशन देंगे. बाकी यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन एवरीथिंग. कॉमा से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता. इट्स जस्ट दैट कॉमा से हल्का सा आपका जो टाइम है वो कम हो जाता है. लाइक आपको थोड़ी सी स्पीड डिक्टेशन की बढ़ानी पड़ती है. बिकॉज अगर जैसे मान लो आपको पटना हाईकोर्ट केस में दिया हो 4 मिनट में 320 वर्ड्स बोलने हैं, ठीक है, तो 320 वर्ड्स में कॉमा नहीं काउंट किया जाता कि वो एक वर्ड है, ठीक है, लेकिन कॉमा बोला जाता है. तो मान लो 320 जहाँ बोलने थे वहाँ पे डिक्टेशन मान लो पूरे पैसेज में अगर आपको 20 कॉमाज आ गए तो 340 वर्ड हो गए. तो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. 340 वर्ड अब 4 मिनट में बोलने हैं अगर आप कॉमा को काउंट करो तो जहाँ कॉमा आता है वहाँ हल्की सी स्पीड बढ़ जाती है. तो यू जस्ट नीड के कॉमा वाली प्रैक्टिस भी होनी चाहिए. बाकी कोई ऐसे डिफिकल्ट नहीं है, आप करते रहोगे तो काम हो जाएगा. ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं बने तो दैट्स इजी, नॉट नाइदर डिफिकल्ट नॉर इजी. चाहत के हमेशा ये थोड़ा अलग ही रहता है सबसे. नॉर्मल पीपल से चाहत हट के काम करता है. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. आपके मैटर्स का मैं स्क्रीनशॉट देखता हूँ जो भी आप डिक्टेशंस कर रहे हो, तो दैट्स गुड. सम मोर पीपल आई कैन सी दे आर रेगुलर. नेहा लगातार भेजती है. खुशी आई कैन सी योर आउटलाइंस एज वेल. बाकी सभी लोग लिखते रहा करो. सर एग्ज़ाम में कॉमा काउंट होगा एरर में? हाँ, कॉमा एरर में आपका काउंट होता है. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपको एक्यूरेसी के ही बेसिस पे आपको सिलेक्शन होने वाला है. ठीक है, कोर्ट में. तो ये आपको देखना पड़ेगा कि थोड़ा सा कॉमा पे आप फोकस करना स्टार्ट करो. ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. अगर आप एक एक करके एक कॉमा आप रिमूव करना स्टार्ट करो कि मतलब चलो आज हम सेंटेंस के स्टार्टिंग वाला कॉमा पहले ख़त्म करेंगे, तो नेक्स्ट 3-4 डेज़ आप उस पर काम करो, आपका काम हो जाएगा. या मे बी 1 वीक. देन उसके बाद में सेंटेंस के मिडल में जो कॉमा आते हैं आप उस पर काम करना स्टार्ट करो. फिर उस पर 1 हफ्ता काम करो, वो आपका ख़त्म हो जाएगा. ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है. ठीक है, बाकी डोंट वरी, क्लास में हम ये सब लाइव करवाएंगे आपके साथ में. ठीक है, हैं पिटमैन से इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं ऐसा वो वाला पार्ट वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में था. इस साल होगा या नहीं पता नहीं. बाकी पटना हाईकोर्ट में ऐसा कोई पैटर्न नहीं है. ठीक है, इंपॉर्टेंट मैटर आज इंपॉर्टेंट मैटर नहीं होगा नेहा. बाकी इंपॉर्टेंट मैटर का पीडीएफ यू वांट, कौन से मैटर का चाहिए बता दो, मैं उसका भेज दूंगा आपको अलग से. ठीक है, वैसे हम देते नहीं है आपको. आई एक्सपेक्ट कि इंपॉर्टेंट मैटर को आप वो वहीं देखना है. 500 वर्ड्स है, उन्हीं वर्ड्स को देख के आपको वहीं पे करेक्ट करना है, वहीं पे रिपीट करना है. ठीक है, बट इफ़ यू वांट फॉर सम मैटर आई कैन प्रोवाइड दैट. ठीक है, नो प्रॉब्लम. चलो, ओके ग्रेट गाइज. सो आई होप द क्लास वॉज गुड. यू हैव रिटन द डिक्टेशन. लाइक कर देना इस डिक्टेशन को. एंड कमेंट सेक्शन में वॉट एवर डाउट्स यू हैव जस्ट मेंशन मी अबाउट पटना हाई कोर्ट. आई एम जस्ट अबाउट टू रिलीज द वीडियो ऑफ द वैकेंसी एंड ऑल दोज डिटेल्स, तो उसको भी ध्यान से देखना. एंड मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग डिक्टेशन एवरी डे. अगर आप स्टेनोग्राफर हो, कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, लगातार डिक्टेशंस लिखते रहो प्लीज़, जब तक जॉब नहीं लगती है. एक बार जॉब लग गई उसके बाद ऑफकोर्स कोर्ट में जा रहे हो तो आपके डिक्टेशंस और इंप्रूव हो जाएंगे वहाँ पे. बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट में जा रहे हो तो इतना डिक्टेशन का काम नहीं है. ठीक है, ओके. यस नेहा, डोंट वरी, कर देंगे प्रोवाइड. ठीक है, लाइव क्लास रोज़ होती है, एवरी डे होती है 8 बजे से 9 बजे तक. ठीक है, मंडे को क्लास यूट्यूब पे होती है, बाकी दिन क्लास गूगल मीट पर होती है. ठीक है, बिकॉज आई लाइक टू स्टे कनेक्टेड विथ ईच एंड एवरी वन ऑफ माई स्टूडेंट. क्या नाम है, कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. जब इस तरह से प्रिपेयर करते हैं तभी मज़ा आता है. ये नहीं कि लाइव क्लास की भीड़ में ऐसे
10 20 100 बच्चों को बस पढ़ा दिया, तुम ले लो क्या करना है, आई डोंट लाइक डूइंग दैट। सो इस तरह से मैं काम करता हूँ, तो गूगल मीट पे वो ज़्यादा पर्सनल टच बना रहता है, ठीक है। चलिए, सो केसी मैटर हैज़ ऑलरेडी बीन अपलोडेड, लीगल मैटर मैं अभी अपलोड कर देता हूँ। बाकी इफ़ एनी वन यू वॉन्ट द एक्सेस ऑफ द सॉफ्टवेयर, आपको डेमो लेना है, जस्ट मैंशन इन द व्हाट्सएप चैट एंड विल गिव यू दैट। चलिए, ऑल द बेस्ट गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, विल मीट इन द नेक्स्ट लाइव सेशन, बाय बाय, टेक केयर।